Give it all. Thank you, Nicholas. Thank you very much. So, welcome, guys. India में कितने लोग हैं? 1.3 billion. Actually, 1 second. अब 1.4 billion हो गए. इवेंट्स के लिए भले ही लेट होंगे, लेकिन हम इस मामले में बहुत ही तेज हैं. Anyway, so tell me, ये जो 1.4 billion में से लोग हैं, इनमें से कितने कंटेंट क्रिएटर्स होंगे? हजारों, लाखों, करोड़ों? अरे आपके घर वाले से लेकर आपके दूध वाले तक भैया सब वीडियो बनाते हैं. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो से लेकर वो कच्चा बादाम खा के नाच लो, व्हाटएवर, हर तरीके के वीडियोस बन रहे हैं. लेकिन हर कंटेंट क्रिएटर सुपरस्टार नहीं होता. बस चोजन फ्यू को मिलता है फेम और पैसा. बाकी क्रिएटर्स का क्या? उनको लाइक्स और शेयर्स के अलावा क्या मिल रहा है? एग्जैक्टली. एस्केप लाइव इज हियर टू चेंज दैट. एस्केप लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर टैलेंट के लिए ऑडियंस है. सिर्फ लिप सिंकिंग और गिमिकी एक्टिंग नहीं है. यहां आपको दिखेंगे द क्रेजीएस्ट ऑफ प्रैंकस्टर्स, यंगेस्ट ऑफ डांसर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ डेयरडेविल्स, यूनिकेस्ट ऑफ सिंगर्स एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन इमेजिन. और ये सब आपको एंटरटेन करेंगे लाइव. एंड यू गेट टू इंटरैक्ट विद देम लाइव. आप चाहे स्लम हाउस से हो या पेंट हाउस से हो, एवरीवन हैज द सेम अपॉर्चुनिटी. आप में गट्स हैं, हंगर है, तो दिखाइए. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड वी विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर. क्योंकि एस्केप लाइफ पे मिलेगा नाम भी और इनाम भी. यहां फैंस आपको सिर्फ लाइक्स नहीं, डायमंड्स में तोलेंगे. आप डायमंड्स खरीद के आपके फेवरेट क्रिएटर्स को दे सकते हैं. ऑन एस्केप लाइव, वर्चुअल डायमंड्स means real money, and more diamonds means more money. अब engagement से diamond होंगे, diamond से engagement नहीं होगा. Okay. बस सवाल यह है कि क्या आप तैयार हो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करने को, फेम के लिए कुछ भी करने को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायमंड्स के लिए कुछ भी करने को. Then it's time for you to log off from your regular lives and log on to Escape Life. Hang on. Welcome, Newa. आइए अब मिलते हैं एस्केप लाइफ के कई टैलेंटेड क्रिएटर्स में से कुछ स्पेशल क्रिएटर्स, द बेस्ट. स्वीट लिटिल गर्ल्स से अब मिलते हैं द सेडक्टिव फेटिश गर्ल्स से. हेलो CEO, what do you want to know? How do you intend to win this 3 crore prize money? Oh, I'll do anything to win. Anything. So tell me, boys, आपको क्या चाहिए? मुझे तो diamonds चाहिए. आप दोगे ना diamonds? I'll see you on the other side. Yes. Okay.
Whoa, that's some. Dark fan. Wow, that's some. It's your boy, Dark Angel, aka Darky. What's up, boys? क्या किया आपने? नहीं, आपने क्या किया? टाइम वेस्ट किया? विनर ढूंढ रहे हो ना? विनर ढूंढ रहे हो ना? Do you know what a winner looks like? Look at me closely. This is what a winner looks like. Darky is the winner. Okay, fine. So looks तो killer हैं, but talent का क्या? उसके बारे में skills भी killer हैं क्या? You wanna see? See, I'm very good with handshakes. I can give world's strongest handshakes. Yeah, you wanna see? Yeah, sure. Yeah, Sure. stay strong. Oh, you want me to shake hands with you? Yeah, Okay. but ध्यान से ताकत लगाना. टूटेगा तो मुझे नहीं बोलना. Absolutely. Ready? Absolutely. Are you ready? Absolutely. Are you ready? I was born ready, okay. Yeah, that's the spirit. All right. Ah, shit. Gotcha! I'm coming to get you all. It's your boy Darky. Diamonds भेजो और इससे खतरनाक pranks देखो. It's your boy की. It's your boy Rocky. Signing out. See you, bro. चलिए सबसे पहले मिलते हैं एस्केप लाइफ के सबसे अहम किरदार से. एनीथिंग वी से अबाउट दिस टैलेंटेड मैन फॉल्स शॉर्ट. एसोसिएट डायरेक्टर टू दिस जीनियस फिल्म मेकर मणि रत्नम, स्टार ऑफ क्रिटिकली acclaimed and commercial blockbusters across Tamil, Telugu and Hindi languages, writer, playback singer and of course the gifted actor from Rang De Basanti, Bomirillu, Jigar Thanda and many more. An artist who has earned his respect and love from audience across India. Please put your hands together for the most versatile and multi-talented actor, Siddharth. Woo! Welcome, congrats. So Siddharth, I've seen a glimpse of your role in Disney+Hotstar Escape Live. It's amazing. What got you excited for the show? Oh, I'm sorry. You can. सबसे पहली बात, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. मेरा नाम सिद्धार्थ है. मैं चेन्नई का रहने वाला हूं और आप में से कुछ लोग मेरे चाहने वाले होंगे जो बोल रहे हैं कि तू अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा है. इसने इतना शानदार इंट्रोडक्शन तो दे रखा है तुझे. बात यह है कि आप ठीक है सर? ठीक है. अगली बात, गिरिए मत. बात यह है कि मेरे कई गुरुओं में से एक गुरु ने कहा था कि तुम जिस भी कमरे में जाते हो ना, तुम्हारा जो श्रेय है वो तुम्हारे पहले वहां पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार, मर्यादा, श्रेय, इज्जत जैसे भी बुला लो, हर रोज, हर कमरे में, हर मंच पे और दुनिया के हर मोड़ पे बार बार कमाना पड़ता है और कमाना चाहिए भी. तो जैसे कि मैंने कहा, मैं एक एक्टर हूं. मैंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये मेरी पहली बतौर लीड कैरेक्टर वेब सीरीज है. और आज मैं इस शानदार मंच पे खड़ा हूं क्योंकि एस्केप लाइव का मंच है ये. और एस्केप लाइव का क्रिएटर, जो बहुत अच्छा नाम है उसका, सिद्धार्थ कुमार तिवारी, उनकी वजह से हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए. और ये मेरे 20-21 साल के करियर का एक बहुत बहुत खुश एक अवसर है, जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं यहाँ इतने टैलेंटेड लोगों के साथ और उनके सामने खड़ा हूँ. तो एस्केप लाइव, मैं वहां पे बैठ के देख रहा था, जावेद सर बोल रहे थे लाइव लाइव लाइव. ये जो लाइव वर्ड है ना, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया यार. क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब एक कलाकार के सामने एक ऑडियंस बैठी हो तो वो लाइव कहलाता था. लेकिन आज ऑडियंस के सामने कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो ऑडियंस बाथरूम में बैठा हो या गाड़ी में या फ्लाइट में, उसके सामने कोई खड़ा है, वो उसको देख पा रहा है, वो लाइव कहलाता है.
तो आज मेरी ये बातें जो भी लाइव सुन रहा है जहां पे भी बैठकर, उन सबको नमस्कार। और एस्केप लाइव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक शो है, एक एफर्ट है जिसका बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज का जो इंडिया है, जैसे जावेद सर ने कहा था, और जो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, इंडिविजुअल्स का जमाना है। कुछ लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि 1000 लोग खड़े हो जाएंगे तो उसकी ताकत अलग है, लेकिन नहीं, आज एक आदमी अकेले खड़े होके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी देख सकता है, कुछ भी खा सकता है और कुछ भी खिला सकता है। तो ये आज का इंडिविजुअल कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस जिस टाइम पीरियड में हम जी रहे हैं, उसको ये एस्केप लाइव ना सिर्फ दर्पण बन के दिखाता है, बल्कि उसी को उसका आईना दिखा के उसको याद दिलाता है कि वो कौन है। एंड दिस इज अ शो दैट रियली शोज अ मिरर टू टुडेज इंडिया. It is made as a reflection of today's India, and I'm very proud to be a part of this show. And Nikunj, thank you so much for coming here and getting the energy of all these people up. But I promise you, I've seen some of your videos and your fans have a lot of love for you because of the way you bring energy into people's lives. Thanks a lot. Thanks a lot. So I believe this show, Escape Live, is going to energize the OTT market space. I think it's going to, if not revolutionize, definitely show a different route marker and a direction for today's entertainment. And I, as an individual, as an actor, am very, very proud to be part of this show. Thank you so much, Siddharth Tiwari, for meeting me. Because कभी-कभी एक मुलाकात में जिंदगी बदल जाती है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ और मेरी जिंदगी काफी हद तक बदली है जिस दिन से हम दोनों मिले हैं। तो आज ये सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की एक 2.5-3 साल की जो, मतलब इसको मैं रिलेशनशिप कहूँ, शादी कहूँ, क्या कहें, अभी काफी हसीन रहा है ये मेरा अनुभव। और स्वस्तिक परिवार के साथ, वन लाइफ स्टूडियोज परिवार के साथ मेरा ये पहली बार जुड़ना है, और हॉटस्टार और डिज्नी हॉटस्टार के साथ भी ये मेरा पहला एसोसिएशन है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी मेकिंग दीज कोलैबोरेशंस। और जैसे मैंने पहले कहा था, मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर बंबई में मुझे आज इतनी इज्जत मिल रही है तो 20 साल में कुछ तो किया होगा। सो आई एम रियली ग्लैड आई एम हियर, एंड आई एम, थैंक यू, एंड आई एम रियली प्राउड टू स्टैंड विद दिस कास्ट। ये एक ऐसा शो रहा है जहाँ पे किसी भी फिल्म में एक एक्टर अगर बहुत फाइट मारता है तो उसका मेन एम ये होता है कि कहीं गलती मत कर दे यार, कहीं किसी के सामने फिसल मत जा, गिर मत जा। लेकिन ये कास्ट इतना तगड़ा है कि मेरे से सीनियर तो जावेद सर हैं, उनसे मुझे डर लगता है, और बाकी सब इतने एक्साइटिंग और एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट टैलेंट्स है। देयर आर सम रियली बिग स्टार्स। आई एम गोइंग टू पॉइंट एट ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली, एंड इट्स बिन माई ऑनर टू ब्रिंग माई क्राफ्ट एंड कम्पीट विथ ऑल ऑफ यू। और मैं शायद ही एस्केप लाइव का कंटेस्टेंट नहीं हूं, लेकिन कंपटीशन तो तगड़ी है बॉस। So thank you so much for all of your brilliance, and I can't wait for the world to see what that man has been cooking up for 3 years. And I really want to thank Disney+Hotstar, because अच्छी कंटेंट बन जाती है, लेकिन अच्छी कंटेंट को ऑडियंस के पास पहुंचाने में जो बात होती है ना, वो बहुत बहुत जरूरी बात होती है। तो I'm here, Nikhil is here, we haven't met, today is the first day we are meeting, so thank you so much Nikhil for all the passion that you and your team have put into this show. और मैंने आपका मंच थोड़ा किडनैप कर लिया है, तो आप अगला कुछ अगर मुझे पूछना चाहेंगे तो। The entire nation wants to know what is your take on social media. ना कमीना आदमी है तू। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इतना ही बोलना है सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन सोशल मीडिया, like everything in life, has a positive and a negative, and I'm learning every day that you must focus on the positive. मैं आपको एक कहानी सुना दूं, काफी लोग जानते नहीं, मैं दिल्ली का हूं और दिल्ली में पला बड़ा हूं, मैंने कॉलेज वहीं पे खत्म किए। और मैं खाऊं तो मेरे अंदर एक बहुत भूखा सरदार हमेशा रहता है, तो मुझे जो पंजाब का खाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल रात मैं और सिद्धार्थ तिवारी कुछ 12:30-1 बजे को बात कर रहे थे कि कल क्या क्या होने वाला है, ये वो। एज ऑलवेज उनका प्रेप थोड़ा कम पड़ गया, उनको और थोड़ा टाइम चाहिए था, है ना श्वेता? सो उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूं अभी। तो आप यकीन मानिए, मैं अपना फोन उठाया, मैंने, डरिए मत यार, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, यूट्यूब पे गया, और पंजाब में एक गांव में एक दादी 150 लोगों के लिए कढ़ाई पनीर बना रही थी। तो मैं बैठ के वो दादी का कढ़ाई पनीर पूरा 12.5 मिनट का वीडियो मैंने देखा,
और फिर नीचे जो कमेंट्स लिखे गए थे पंजाबी में, हिंदी में, जो भी, कि दादी याद आ गई मेरी, नानी याद आ गई मेरी, वो खाना 150 लोग के लिए बना रही है, लेकिन 1.5 लाख 1.5 करोड़ लोग उसे देख के सोशलाइज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया सिर्फ गाली गलौज, किसी एक मास्क या नक्शे के पीछे छुप के गाली गलौज करना, वो पॉलिटिक्स है, वो सोशल मीडिया नहीं है। तो सोशल मीडिया मैं समझता हूं कि अगर एक आदमी अकेले बैठकर किसी एक झुंड या एक भीड़ में शामिल हो सकता है तो वो सोशल मीडिया है। तो मैं उसे पॉजिटिवली लेके चलता हूं। और आज तक का मेरा जो 12 साल का सोशल मीडिया जर्नी है, अच्छा हुआ कि लाइफ में भी ऐसा डिलीट बटन आता है कि आगे जो होने वाला उसको देखो, पीछे जो हुआ किसी और के साथ हुआ है सोच के आगे चढ़ते चलते बढ़ते जाओ। तो सोशल मीडिया के बारे में मेरी ये राय है। I mean, obviously, social media made me stand here with you also. So, Are you guys have fans today? The kind of fan following, recognition, instant karma, instant gratification that content creators and talents have. Because back in the day, you know, you had to be seen by one person who believes in you. और वो आपको करोड़ों में जाके शामिल कर देता था। लेकिन आज आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं, और वो मुझे बहुत पावरफुल लगता है। और मैं समझता हूं कि एस्केप लाइव जैसी शो देखने के बाद जो अभी तक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहा है वो भी कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी का मानना है दैट एवरीबडी कैन क्रिएट, एवरीबडी शुड क्रिएट। तो आपने एवरीबडी कैन डांस सुना है, अब एवरीबडी कैन क्रिएट, एबीसीसी करेंगे अभी। हाँ, सो थैंक यू सो मच गाइज। इट्स रियली रियली बिग थिंग फॉर मी टू be among people I respect, and to get respect from those people is one of the most gratifying experiences of my life. So thank you so much for letting me be part of this show, all of you that are involved in making it, and we can't wait for you to see this because there's a lot more to come from the world of Escape Live. Jaisa ki, if you don't mind, can I call on all the cast members? Please. They're all here. Where are the seniors? They're backstage. वो शायद ऊपर से, मतलब what's the situation? मैं बुला सकता हूँ एसकेटी सर सबको? Yes, definitely. सबसे पहले तो बुला लें सबको। Yes. ओके, सबसे पहले हमारे जो सीनियर हैं, जिनको मैं कॉलेज से दूर से प्यार करता आया हूं, और एस्केप लाइव का एक बहुत सुंदर अनुभव ये रहा है कि मैंने उनके सामने उनका बॉम्बे बॉयज का गाना उनके लिए पूरा एक बार गाया था, और वो मुझे इट वाज लाइक माय एस्केप लाइव कंटेस्टेंट। You need to do that again before calling him. अरे दैट, so if I see him I get a bit scared. We're all a little nervous when we're around Javed sir. Let's do it before he comes in. ए भास्की डाल, देखा? He comes and he'll come and whack me on the head. Javed sir, there he is, the man. I'm going to call everybody up in no specific order. Let's start with Geetika, Valusha, Shweta, Give it a round of applause, guys. Swastika, Jagjit, और कौन है पीछे? वो हमारी डांस रानी आद्या, और हमारे इंटरनेशनल सुपर टैलेंट जो डार्की कहलाते हैं, हमारे कृष्ण रह चुके हैं, सुमेध, जो सब कुछ बहुत उम्दा करते हैं, सुमेध। और कोई अगर कास्ट मेंबर मेरे से रह गया हो तो लविता। बोल दे। अरे यार सॉरी यार, मुझे जान से मार देगी वो। हेलो बॉयज, आ रही है। How could you forget me? I didn't forget you. Just you were too hot, so I kind of got confused. Thank you. And this is Plabita. So this is the incredible cast of Escape Live. I'm so proud to be here. Come here. And now, Nikunj, over to you, yeah? Yes. We have one mic now, we have to rotate it. The plan was to call one by one, but now everybody's on the stage. It's cool. We're all mic'd. You're all mic'd? Amazing. Yeah, not all, amazing. like some of us are. So you have a mic? Well, okay. I already have a mic, so she can. Valusha can. I already have. Yeah. कुछ हो गया? हाँ, हो गया, आगे पीछे हो गया तो ठीक। यार मेरा पहला एक्सपीरियंस वाज विद सिद्धार्थ कुमार तिवारी। नाउ दिस मैन, इनका जो पैशन देखा मैंने, तो वो मुझे इतना, मतलब इमीडिएटली आई सेड यार ये शो मुझे करना है, बिकॉज आफ्टर आई रेड द सिनॉप्सिस ऑफ द शो, फिर मेरी मुलाकात हुई और सिद्धार्थ से जब मिला, और मैंने जिस तरह से, जिस डिटेलिंग में और जिस पैशन से, कि वो एक शेर है इकबाल साहब का कि दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, विच मीन्स फ्लाइट, परवाज मीन्स फ्लाइट। सो नहीं यार, उससे थोड़ी शेर मारता है कि ताली मारो, बट
जो दिल से जो आवाज निकली है और सिद्धार्थ कुमार के दिल से ये आवाज निकली है, एंड आई फेल्ट that this is a show I must do. When I read the entire script and with the narration, it was an amazing script because it is so contextual, it is contemporary, और हम relate कर सकते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं. It's like a nuclear energy. ये जो social media है, you know, इसको या तो आप nuclear bomb बना लीजिए या उससे आप energy create करिए. So that is the only difference, and this can go either ways, the bright side and the dark side. और इसके base पर it is so मतलब कॉन्टेक्चुअल, आज की जिंदगी में हम रिलेट कर सकते हैं हमारे बच्चों के थ्रू. सो आई फेल्ट दिस इज एन अमेजिंग शो एंड दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड, एंड द वे ही इज पुट इट टुगेदर विद ऑल द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मस्ती एंड धमाल एंड एवरीथिंग, एवरी फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल व्हाट वर्क्स टू फॉर अ सक्सेसफुल शो और अ फिल्म दिस हैज. एंड मुझे लगा कि इसका हिस्सा तो मुझे बनना ही है डेफिनेटली. Amazing, that's amazing. Have a seat, sir. Have a seat, please. सीट, Can everybody have a seat? सीट ले लेते हैं. कुर्सी की तो सब बात होती है हर जगह. I'm gonna have a seat too. Come. सिद्धार्थ का. Hold. अच्छा. हाँ यार, आपने बुलाया नहीं यार. मैंने उतना इंट्रोडक्शन कर दिया सिद्धार्थ का, इतनी बार बातें कर दी सिद्धार्थ के लिए, और मैंने नाम में कंफ्यूजन हो गया मेरे को. इनके मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, इनके सिद्धार्थों पे चलूं, मैं भी वही ट्राई कर रहा था. यहाँ पे आ. One sec, we'll. Can you on please behalf have of the entire cast and crew? I think we've all heard these words: SKT, Sid sir, SKT sir, Siddharth Kumar Tiwari, Siddharth. Round of applause, Siddharth Kumar Tiwari. Escape Live is here before you because of this man's mind and this man's heart and his brothers pushing from every direction. Rahul Tiwari, that's you. This is Siddharth Kumar Tiwari, the doyen of this show, the creator, the reason we're all here. And I'm so proud, and we all love him. We love you, SKT sir. Please, sir. Please welcome. Can you talk about the show a little bit? Can you talk about how it was working with this whole cast? That's a great question. ये जो अभी भी हुआ ना कि चेयर बाद में आई, माइक पहले गया, उसके बाद ये हुआ, यू नो, ये कास्ट का एक सैंपल था जो अभी आप लोगों को स्टेज पे दिखा, यू नो. तो ये रोज होता था मेरी लाइफ में. मैंने 120 दिन ये शो शूट किया अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया with such diverse set of people, such diverse talented people. Currently I'm nice to you. Okay, should I be? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है. सीनियर का मेजरमेंट नहीं देंगे हम लोग. No, firstly, good evening. Thank you everybody for coming here. बहुत सारे लोग you know, इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से कहानियाँ कहने की. तो ये वो कहानी है जो वो काफ़ी साल लगे इसमें समझने के लिए कि ये दुनिया क्या है और इस दुनिया के बारे में कैसे इस दुनिया की कहानी कही जाए. कि आज के टाइम पे जो दुनिया में मैं खुद रह रहा हूँ, वो दुनिया की कहानी मैं किस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा था. सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी. एस्केप लाइव हैज़ बीन अ लाइफ चेंजर फॉर मी. सो आई एम थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई थिंक विदाउट यू ऑल nothing would have been possible. It's impossible to just look at the people over here. You know, the kind of people who chose to be a part of this show. You know, of a part of this story rather. Why it's not just a show, it's a story. So all of you decided to be a part of this story. All the people who are sitting here, a lot of people who are absent from here. I think each and every one. You know, thank you Nikhil for believing. You know, always day one, Nikhil said, let's do this show. So I'll never forget that. Until date, you know, he told me 6 months, it's taken 3 years, 3.5 years, he's still standing with me. So 6 months में मैं deliver नहीं कर पाया thanks to all the other variable factors in my life. But thank you, I can see some people I love in the crowd as well. Thank you Vibhaji for being here. You know, a lot of people, you know, thank you so much for coming here. I can talk a lot about my actors. काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पे इनकी अच्छाइयाँ बताने में. तो अगर आप लोगों को शौक है तो मैं बोल सकता हूँ. Yes. Please start. कहाँ से स्टार्ट करूँ? श्वेता के चेहरे पे ऐसा लुक है, not me, no, don't start with me, you know. No, I start with my darky boy. You know, here is one man, you know, ये एक ऐसा एक्टर है जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता है. मुझे लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है. जब मैंने इसे बोला कि तुम कृष्ण प्ले कर रहे हो, let's do Darky, which is like the other extreme. I think the kind of preparation, Darky boy, the kind of preparation Darky's done, the way he looked, the way he lived while doing television, I think that's quite commendable, you know.
डाकी बॉय, थैंक यू सो मच. एंड डाकी की असलियत ये है कि वो कहीं पे भी टाइम पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. आज मालूम नहीं कब आया है ये. अभी 5 मिनट पहले आया. आया ना, अभी अभी पहुंचा है ना. हाँ, जस्ट टेक के जस्ट पहले पहुंचा होगा, यू नो. और फिर वो जो लाइन बोला होगा, जावेद सर भी सोच रहे होंगे ये स्क्रिप्ट में थी क्या. ये डाकी की खासियत है. जावेद सर भी सोच रहे होंगे सर ये एक्स्ट्रा लाइन कितनी बोली सर उसने. काफी सारी I बोली. was prepared. I'm always. He is Daki sir. One हाँ, वो season the मैं zone. इसीलिए तो आई. Yeah, he is always. Daki, you want to say one word about the show? What do you want to talk about the show? The show is excellent. Yes. मतलब I feel really good to be a part of this show. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक साथ इतना डाइवर्स कैरेक्टर प्ले कर पा रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर. मेरा आर्ट, मेरा क्राफ्ट, मेरी क्रिएटिविटी जिस हिसाब से बूस्ट हुई है इस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो आपने दी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ये जो इंसान बोला ये कौन था. You know the way you transform yourself. the way he transforms himself is amazing. No, thank you so much. You know, commendable. उसके बाद उसके साथ में गीतिका जी बिल्कुल ही इनके साथ मैं क्या करूँ. You know, such a talented actor again. Actors wise, I'm not even commenting. Like मैं क्या बोल सकता हूँ. I'm blessed to be able to work with you guys. At the outset only I said that. But Gitika, the way we were doing a जैसलमेर story, तो जैसलमेर के गांव में जाना, वहाँ पे जाके रहना, वहाँ के वर्ल्ड को अपनाना और इस तरीके से परफॉर्म करना कि you know you feel like you're a part of that world. I think commendable. Dance Rani की mother, the one who saw the dream, the one who made this small little girl see the dream. So fabulous. Gitika, I think, is superb. She doesn't talk in Hindi language mostly. You know, that's the other side of her. You know, सिर्फ शो में डायलॉग्स जब आते हैं तब वो हिंदी बोलती है. नॉर्मली उनकी इंग्लिश कहीं से उन्होंने एक्सेंट भी लिया हुआ है, वो मालूम नहीं. हरियाणा से. हाँ, हरियाणा से एक्सेंट लिया है. मैम प्लीज बताएंगे आपके एक्सेंट के बारे में. जी मेरा एक्सेंट इंग्लिश का है. हेलो, am I visible? Am I audible? Am I visible? मेरा एक्सेंट इंग्लिश का जो है that is from Haryana, and which is where I did my schooling from. This man has an exceptional ability of making you feel so wonderful about yourself that you continuously outdo your own better performances. So that's what he's doing right now. That's what he's doing to everyone. मैं हिंदी में भी बात करती हूँ. मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, लेकिन मेरी टांग खींची जाती है. But I can comfortably shift gears. I think shifting characters, shifting gears, shifting seats, shifting spaces, that's what life is about, and that's what this show is about. How everything is changing, everything is evolving. And Javed ji spoke about nuclear energy. The nuclear power reactor is there, and all of us are like zzz. Electrons. Yes, we are electrons. No, thank you so much. Gitika, you're outstanding. It is just the beginning. You know, there is no one in the world can stop you from here. You know, it's a writing on the wall. You know, and that gets me to the nurse next to you. What outstanding? Huh? सर कौन सर आप नर्स आउटस्टैंडिंग है सर. नहीं, कॉलेज में भी आउटस्टैंडिंग थी. क्लास के बाहर ही खड़े रहती थी. सर मेरे को लगा आप फेटिश गर्ल आउटस्टैंडिंग बोल रहे थे आप. सर आप मेरे को लगा फेटिश गर्ल नर्स आउटस्टैंडिंग बोल रहे थे सर. आप अभी मिले थे ना बैक स्टेज उनसे. सर थैंक यू. So that comes to fetish girl. I think Plabita, the only person for fetish ever that I worked with was Plabita. There's nobody else I ever discussed fetish girl with. She's given her heart and soul like everybody else, but again, you know, playing a character like fetish is not something that's very easy. You know, you need to be so comfortable in your skin. किस तरीके से आप उस कैरेक्टर को लाइफ लाते हो, बिकॉज इवेंचुअली ये सारे एक्टर्स जो हैं इन्होंने ही ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं. मैं तो वो पीछे बैठता हूँ. फाइनली आई ऑलवेज बिलीव दैट you know the actors eventually create the characters on screen. So you know, thank you for owning fetish girl. Thank you for living like fetish girl. Thank you for being on a diet for 1.5 years. You know, and because of all the COVID reasons. और हमने ये शो COVID के थ्रू शूट किया है. 1, 2, season 3 सारे जो आ रहे थे सबके थ्रू से. तो हम लोग ने किस तरीके से how she's maintained the focus for your character, because that's really difficult. It's easier to do one thing at a go, but to be consistent over a period of time takes a lot of extra effort. So fetish, I think Plavita, you're fabulous. You're just who you are on screen. You've taken this whole
what do you say, the personal aspect of Fetish Girl to another level. I think when people will see the story, they will get the other side of Fetish Girl. Because like Siddharth said, it's a mirror to the world that we are witnessing today. जो दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है. हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ और कहानी होती है. तो इस कहानी में Fetish Girl के through हम वो चीज़ देखेंगे. So I think it's very exciting. Thank you, Plavita. Thank you actually for giving me this opportunity. Like really, I never thought that I always wanted to play different kind of characters, but when I got to know about fetish, I was like, what, really? Like, am I doing this? Because it is so exciting and it is so, what I really enjoyed was that initially, what I really enjoyed is that I, as an actor, grew a lot through the show. Like, I started with feeling obviously like little awkward to play fetish and how I owned it eventually. And now I'm like, you want me to be fetish? Oh yeah, here I am. But there's also one secret that I would like to tell everyone, that whenever I was confused about how to say this particular line in fetish tone, I would just go to him and Siddharth will be like, say it like this, and he will say it out and I will copy him exactly. So a lot of the scenes, in a lot of the scenes you will see me actually copying him. So he is somewhere the real fetish somewhere deep inside. So are you saying that I have an other side, which is like Fetish Girl, you know? No, but really what I what really helped me was SKT that Live. SKT Live. No, but what really helped me is that we had a fabulous crew, and that really helped me be extremely comfortable while being on set, and you know, with all my fetish costumes and the scenes. So that really helped also. So yeah, and I'm very happy and I'm very excited for the world to see Fetish Girl and all the other characters. Thank you so much, Fetish. I think great times, and the girl next to you, just the opposite. ये एक child prodigy है मेरी आद्या, हाँ, ये मेरी आद्या है कि डांस रानी, you know, जो करीब मतलब मैंने इतने child actors के साथ काम किया है in my journey so far, but I've never met someone like her. You know, जिस तरह का preparation ये खुद करके आती है set पे, इसकी मम्मी के साथ में, इसकी मम्मी आज दिख नहीं रही है मेरे को. मैम आज भी dialogues करवा दिया आपने? सब ready है? हाँ, okay. बेटा, but she is such a superstar. I think just a matter of already जो काम तुमने किया है, मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ? I love you, baby. कुछ बोलने का है ही नहीं, you know. जिस तरह से तुम prepare करती हो, जिस तरह से perform किया है, you know, I think it's simply brilliant. Thank you. ये आध्या नहीं है, पूरिया है. And then there is Valusha. Jia, how are you, Jia? How are you feeling? Are your lines ready? Today we're talking in Hindi language, okay? Very important language for the world, you know, very, very important. And all your lines need to be in Hindi, okay? No, but it's a very strange relationship that I've had with Jia, you know, in this journey. It's been actually a very strange relationship. You know, when we started working, you know, Jia as a character, the way Valusha came in to perform this particular character, and the way, the kind of effort Valusha puts it into behind every dialogue, every line is simply commendable. The kind of rehearsal she would do, you know, every morning, that I've heard that Hindi teacher is training her with the diction, you know, because that's not her natural language. But as a performer, this was a character which had English and Hindi. It was not only a rural-based character. So it was perfectly fine from a performance standpoint. But she over-preps. If I prep, you know, we need to meet her, and Siddharth knows everything any which ways, you know. So the way you approach Jia and the way you got it to life, and the way every aspect of your journey with Escaype Live, how was it? First, I have to say thank you very much for actually looking and seeing Jia in me. I've had an amazing journey all through Escaype Live, and like some of them have said, I have grown. I think we've spent 2.5, 3 years nearly on this show, a lot of heart going into it. Just very grateful that you saw
that I was able to bring Jia to you. Also very easy prepping for this, although a lot of people thought it was really difficult. Let me tell you, I had everything that Jia is SKT. So if she has a little sarcasm in her, it comes straight from there. सब आपकी character से लगता है. Everybody will agree. यहाँ से हॉस्पिटल सर आपके अंदर काफी कैरेक्टर्स हैं और सारी लड़कियां हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा वो आपने नहीं कहा ये कि मेरे अंदर भी वो है. क्या कैरेक्टर है? No, but it was actually, I mean, you know, he really helped. And the thing that's really special about Siddharth is he has so much of patience. And he has this innate way of saying, oh, this is how you want to play the character? No problem. Tell me how you'll play it. So then you'll spend half an hour saying, you know, this is how I see the character. This is what I want to bring to it. Acha, okay. Now we've wasted 30 whole minutes on this. Then he says, but this is how I see. So you'll play it like this? So then you have to say, okay, no problem. But every day he did this, every day, every single day. We came in and me for sure, I know a lot of people around me had suggestions on this is how I should play it, this is how I should see it, and he gave us the time. So thank you for that. Thank you for letting us explore and then somehow coming right back to your vision. Thank you. No, I want to genuinely say this without any thing. You know, I feel that all of you, if you did not believe in what you were playing on screen 100%, it wouldn't be what it is, you know. So it's very important for every actor to, from my perspective, to believe in the characters that they are playing. So I would hear you for you to believe more in what you're doing. So, I believe and all you. of you. And I would really want that. Yeah, because even eventually... there's a little hint of sarcasm. See, I listened to you, but then I did it my way. It's an honor, you know, it's an honor. But I feel that if you guys didn't perform the way you guys have performed, you guys build characters. When people see you on screen, I think the value that you get to the table for me is priceless. So I'm very selfish. I'm only wanting things to go a particular way. I want the best out of all of you. And I'm so glad that I've got that. Thanks, Siddharth. Thanks for your patience, most importantly. Thank you, Jia. Mama, ये हमारे जगजीत संधू जी हैं, हमारे मामा जैसलमेर स्टोरी के. मामा ने मुझे बहुत एंटरटेनमेंट भी दिया है जैसलमेर में. द वे मामा preps for his characters is very different than how anybody else preps for his characters. You know, he is. जब हमने मामा के कैरेक्टर के बारे में बात करना स्टार्ट किया तो बहुत इजी था मुझे उसे एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना. पर जिस तरीके से जगजीत फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और जब हमने बात करना स्टार्ट किया कि हम किस तरीके से मामा को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें प्यार है पर फिर भी इंसान है. तो वो वाला जो एस्पेक्ट है, वो जो मामा ने करेक्ट किस तरीके से जो सुर पकड़ा है, एंड द वे ही ऑल्सो दिस इज वेरी गुड सीन विद मामा अगेन, जहाँ मामा अपनी लाइंस अपने आप ही जोन में आते हैं तो वो अपने आप ही बोलते हैं 2-4 मिनट. और एंड द वे ही परफॉर्म्स. मामा, व्हाट डू यू फील, कैसा रहा आपके साथ? थैंक यू सो मच सर. इस एस्केप लाइव की दुनिया में छोटा सा गांव जैसलमेर में हमारा भी है. हाँ, वो लाइंस मुझे याद है. एक सीन था, उसमें मुझे बोला गया था कि सिर्फ 2 लाइंस लेनी है, उसके बाद कट कर देंगे. तो सर बहुत मुश्किल से कट बोलते हैं, तो वो कट नहीं हुआ. तो लाइंस चली गई, 2 मिनट आगे चली गई. तो उसके बाद वो कंटिन्यूटी वाला एक आता है जो बाद में आके एक्टर को बोलता है, भाई ये तूने ये कर दिया है. मैंने लाइन बोल दी, लेकिन बाद में वो मुझे याद करनी पड़ी. सर ने बोला अब तू याद कर इसको, तूने क्या क्या बोला. थैंक यू सो मच सर. पहले तो नंदू मामा, तो ये करैक्टर कुछ ऐसा है कि इससे पहले जितने भी मामा रहे हैं, चाहे वो महाभारत हो चाहे कहीं भी हो, तो वो थोड़े कमीने टाइप दिखाए गए हैं. ये मामा कैसा है अभी मैं नहीं कह सकता कि इसको मैं किस कैटेगरी में रखूं. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर मुझे यहाँ लाने के लिए. और स्पेशली एक दूसरे की कहानी के बारे में हम कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ, लेकिन पहली बार जब हम मिले थे पार्टी पे तो मुझे लगा यार ये अपनी दुनिया है. जानता भी नहीं था मैं क्या कहानी है, किसने क्या किया होगा. वो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए किसने क्या क्या किया है. लेकिन एक लगता है कि ये पूरी एक फैमिली है. तो ये दुनिया है एस्केप लाइव की. थैंक यू सो मच सर यहाँ लाने के लिए. थैंक यू मामा. जावेद सर के बारे में आई डोंट नो व्हाट टू से. आई थिंक आई हैव रियली ग्रोन अप ऑन
watching you. मुझे तो लगता है आधा हिंदुस्तान यही बोलता है सर वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यू. सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैं आपको बहुत बताता अच्छे हूँ. ग्रो अप हुए हो सर तुम यार. प्रॉब्लम आपका नहीं है सर, प्रॉब्लम बिल्कुल ही आपका नहीं, हम लोगों का है. वी ऑलवेज वांट टू फील यंगर. वी वांट टू से दैट वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यू, दैट मींस वी आर यंगर टू यू. सर इट्स आवर कॉम्प्लेक्स सर. आप बिल्कुल इन पे मत जाना, ये सब ऐसे ही बोलते हैं लोग हमारे जैसे. नो बट जावेद सर, मैं यू नो I've had the opportunity to be a fly on the wall when in my earlier days of my career where I used to work with a broadcaster, and I have seen you work from a distance, and I thought that possibly someday we would work together at that point in time. And post that for this series I needed a personality who could actually drive this Escaype Live, the app world, the world of Escaype Live, because एक कॉन्टेस्ट ही सिर्फ अनाउंस नहीं हो रहा है, उस कॉन्टेस्ट के पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी करियर्स में देखे हैं इस इंडस्ट्री में. सो उसको करेक्ट तरीके से दिखाना था. उसके लिए needed somebody who could have that weightage, the power, the authority. And more importantly, if you say something on screen, it feels like it's serious. It means business. So you are in the business of entertainment, running the app called Escaype Live. You're the CEO of this app. And thank you, sir, for working with us and making this reach here today. No, what I said when I said in the beginning, जब मैं पहली बार मिला था तो मैंने इतना पैशन देखा उसमें. और मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है कि आपने मुझे ऐसे रोल में सोचा जो थोड़ा सा मतलब नॉर्मली कनेक्शन होता है कॉमेडी फनी, बट यू थॉट नहीं दिस इज अ वेरी सीरियस कैरेक्टर. कॉमेडी करता ही नहीं है कैरेक्टर. एंड थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी लाइक दैट. और एक और बात, एक्टर के लिए बहुत ही एक खुशकिस्मती की बात होती है जब एक डायरेक्टर मिलता है जो कहता है और बहुत क्लियर है अपने हेड में कि सर इसको ऐसा कर लेते. बिकॉज एक्टर फिर बियॉन्ड अ पॉइंट फिर वही करने लगता है, एंड देन यू हैव टू बी लाइक क्ले कि भाई ओके आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे मोल्ड करिए, क्या बनाना चाहते हैं मुझसे, आपने क्या से आपकी क्या एक सोच है. So that's what you do brilliantly. You know exactly, because you've also written it, and all of them have said the same thing. Okay, you know how to mold each character, and you know who's playing what in the orchestra. So like, you play here, you play this, and you know how it'll play together. So to get somebody, कि सर यहाँ पे ज़्यादा हंसिए मत, यहाँ पे keep the slight smile और थोड़ा सा look देना, which बहुत बारीक चीज़ होती है. And it is so refreshing and एक एक्टर की एक बहुत खुशी होती है कि एक डायरेक्टर चलो यार कुछ करवा रहा है मुझसे, कुछ अलग जो मैंने सोचा नहीं था वो मुझसे करवा रहा है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. प्लेजर टू वर्क विद यू. No, because you see it going in the right direction. ये आज तक ना मेरी इतनी बड़ाई किसी ने की नहीं है, मेरे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. प्लीज मैं क्या कर सकता हूँ मुझे मालूम नहीं. ये लग नहीं रहा है कि हमने साथ में काम किया है. सर थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट जोकिंग. What else to say? But this is not script. This is genuine. I've been working for like 36 years. And, there are only a handful of directors who I feel like I thoroughly enjoyed. And I was so happy with the work which was extracted by the director. So, thank you for that. Thank you so much. And after extracting work from you, whatever I could, it gets me to the man who's taught me half the things on the set. Siddharth, I think we went all the way to Chennai to convince him कि ये जो रोल है, because for his stature, for him to come on the show, he was not bothered about how much screen time, he was bothered about how important he is in this story, and then that vision for an actor to have in a series context, it's not a film, so that was very, very important for him, that what am I doing in this story, and how he agreed to be a part of the show. That I think you have to say why you agreed and what happened. But for me, because I was handling these people, as you can see, working with them so closely. And with Siddharth, he's been into direction much before I was born, I would say it this way for him, and much before. Sir, I'm with you, sir. Sir, I'm with you, sir. Much before I was born. So he would guide the whole AD team. He would guide everybody. Everybody was jumping on him because he is such a laugh riot. He'll keep the energy on the set to be so positive that while we were shooting the whole Escaype story, it was so much fun because he would
there'll be entertainment, there'll be post-shoot entertainment, there'll be pre-shoot entertainment, and it just continues with him. And the kind of knowledge on direction and his character, the way we discussed the character of Krishna over, I don't know how long, until the last day of shoot only we were discussing. So I've had a great journey with you, Siddharth. It's such an honor that you chose to be a part of Escape Live as your Hindi thing on this. It's people think that you're from south of India, but I feel that you're as Hindi as me, because your Hindi is far better than mine in most of the places. So for me, I genuinely love you as always, and I'm such a honor that you decided to work with us. I think Escape Live is not just an acting job for me. I also got to be a first AD to Siddharth Kumar Tiwari. तो ये बात सही है कि पैकअप के बाद मैंने काफ़ी मनोरंजन ऑर्गेनाइज किया है, इस बात से मैं सहमत हूँ. और ऑन सेट तो मतलब इन सब ने जो बोला है, जब लेखक खुद उठ के स्टार्ट कैमरा एक्शन बोल के खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही पूरी आर्मी खड़ा कर देता है, तो दैट शोज दैट वी आर ऑल फॉलोइंग वन ब्रेन. एंड आपने एक सवाल पूछा कि व्हाई डिड आई चूज टू बी पार्ट ऑफ एस्केप लाइव. जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड. और जब मैंने पहली बार पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था, और हमारे दिस मैन इज एन अमेजिंग एक्टर, मैंने इनका काफी काम पहले भी देखा हुआ है, बट पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो एट द टाइम आई वाज पॉसिबली द वन पर्सन हु हैड बीन डिस्कसिंग ऑल द ट्रैक्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड. हमने इस स्क्रिप्ट पे कुछ 2.5-3 महीने सिर्फ जूम कॉल पे पूरे स्क्रिप्ट को काफी डिस्कस किया था. और उस टाइम मुझे स्क्रिप्ट का जो स्केल और स्कोप दिखा, वो इट वाज सो बिग, एंड आई केप्ट आस्किंग आप कैसे कर लोगे, इतना बड़ा शो कैसे कर लोगे. आज मैं अपने आंखों के सामने मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो कैसे गया. इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ रियली हार्ड वर्क, एंड यू नीड टू इंस्पायर पीपल टू बिलीव इन समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड. एंड मैं पहली बार पढ़ के इंस्पायर हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया. और जो कृष्णा रंगस्वामी का कैरेक्टर है, मैंने कई लैंग्वेजेस में वर्क किया है, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी भाषा में एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ जो लैंग्वेज ऑफ द शो उसकी मदर टंग नहीं है. तो मैंने वो पहले कभी नहीं किया था. तो आई हैड ऑलवेज बीन अ हिंदी स्पीकर इन अ हिंदी फिल्म, तेलुगु स्पीकर इन अ तेलुगु फिल्म, तमिल स्पीकर इन अ तमिल फिल्म, मलयालम स्पीकर इन अ मलयालम फिल्म. बट आई एम प्लेइंग अ कन्नड़ा स्पीकर इन अ हिंदी फिल्म, इन अ हिंदी शो. और आप जानते हैं हमारे देश में जब किसी को कोई भाषा आती नहीं है तो उसको वो कैसे कवर करते हैं ऑन स्क्रीन. तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि मैं कन्नड़ा भाषा को रिप्रेजेंट करूं और हिंदी को भी कहीं ड्रॉप नहीं होने दूं. तो वो वाज द एफर्ट, एंड दैट्स व्हाई इट वाज एक्साइटिंग टू प्ले दिस रोल. Thank you, my friend. And then that comes to my fanboy moment. Oh, just look at her. All of our fanboy moment. I think, I've been such a fan of Swastika's work. We are Swastik, she's Swastika. So just an alphabet difference, So, she's such I remember talking to her pre-COVID, telling her about this role. Very interesting, which we can't talk about now before it releases. Extremely interesting and exciting. But everybody present here has said that they replicated or copied or motivated what Siddharth asked them to do on set, but unfortunately I couldn't do any of it. You know why? Yes, I know why. That I had to do things on my own and with my co-actor, and I just needed a nod or a go ahead or it's okay kind of thumbs up from Siddharth Kumar Tiwari. And I think you really need to be in sync with the director and the team and the crew on set to deliver a performance that needed so much of, confidence and motivation, and it's not easy. And I've been following work of a lot of actors whom I'm sharing the stage with right now, and it was like an incredible opportunity for me to be a part of this show. And I've been working for the last 22 years in Bengali language, and I've just started my career here in Hindi language entertainment industry. And I know a few of members of the press are here who've come from my homeland, Kolkata. And
I can just, tell this one because I can't divulge more about my character and my role in the series, that I was most excited to do this and be a part of the show. Of course, the creator, the team, the production, the scale, everything matters, your co-actors. But it's always been very important for me that I do something that I have never done before. And I never want to repeat myself on screen the way I am, the way I behave, the way I look. And I can assure all, my fans and my viewers and the audience of this series that they have never seen me doing whatever I have done on screen in Escaype Live. And when you work for so long and when you've been, acting and you've been in this profession for so many years, I think for me, why I wanted to come to Bombay and why I wanted to explore newer workspaces is I really wanted my directors to tell me that this is not what I want, or I'm not liking what you're doing, so I want something else. Because when you're working in the same industry for 2 decades, everybody feels, like whatever you're doing is the best, and everybody is very happy and comfortable with what you're giving. So I just wanted to work elsewhere and push my own comfort zone and boundaries. I won't say I'm not very good in Hindi, but I have a problem with the gender, and I keep messing things up when I'm trying to, speak in a flow. So that is one area of difficulty. And I also wanted to work with newer directors and play newer characters where people will be unhappy with me so that I can push myself even more. So I think I've pushed myself and pushed Plabita a lot. And That you have. yeah, literally. And I'm very, very excited to see the end product of it on 20th May on Disney+Hotstar. And a very important part of our crew member, our DOP, Asim Mishra, sir, he's not there with us today. But I would really want to thank him for making, the entire shooting process so comfortable for me and Plavita, because it was difficult what we had to do and what we were doing. And the DOP really helps, I think, a lot, along with the crew members and the directorial unit to make the actors feel in their own comfort space to give the performance that is required for the show. So thank you, Siddharth. Thank you. And thank you for calling me. I remember I was in Kolkata and I was very surprised because whatever has happened in my life and my career in the last 2 years hadn't happened then. It was way back in 2019. And I was very surprised that somebody is planning to do a web series in Bombay and, such a huge scale. And they've called me up and I think I was overwhelmed and very excited and very happy about it. So thank you, Rahul. And all the members of One Life Studio. And yeah, I keep telling them that they should add a A. I mean, Swastik Production, A likhne mein kya problem hoga? Likh do kabhi yaar. Building ke bahar. Thank you so much. Thank you so much. I think it's been such a long journey on this series for you. And I remember just now that we spoke in 2019 about this character. So yeah, what a great journey. Finally gets me. Definitely you're not the last, you don't know that. You don't need to really understand Shweta Tripathi, right? So, for me, she has been somebody, because we went through a lot of crisis during the shoot. बनारस में शूट हुआ और कॉल ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता. Also, इस शो में मैं किसी का खून नहीं कर रही थी और कोई मेरा खून नहीं कर रहा था. So that's why I thought कि I have to be happy. That is such a good change for me. So that's why I decided to do it. But on a serious note, I think Escaype for me, I think Escaype Live is about the business of entertainment and the price that you, me, all of us pay for it. And the script.
the concept. When I read it, I knew that I have to be a part of it, and I think that's how I've always chosen my scripts. 2 डायलॉग हो, 2 पेज के हो, 200 हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता है. आप कहानी में कर क्या रहे हो, आप कहानी में कह क्या रहे हो, and the small story that I am a part of, I am very, very extremely happy that I did Sunena, because every character that I play, it leaves a little bit of the character in me, and I leave a little bit of myself in the character. And Sunena, there is a lot of Sunena in me now, so thank you for that. And God knows what all she's left behind in Banaras. She's always there anyways, you know. thrice a year बनारस जाना तो होता ही है. No, but thank you so much. You're a fabulous actor. Now, what do I tell about this? Everybody knows that, you know. And for you to be a part of this series, again, I think you also been around since forever for this role. And the kind of smaller details that you added in Sunena as a character on screen really makes it all. I think everything just fell into place. Sometimes in life, things fall into. Planning to do the Q&A on Escape Live? I'm joking. Can we have a picture together? I want to quickly add something. Yeah, please. Sorry. I just want to say that also for Fetish, or all the characters I feel to bring us to life, what really, really worked well and who worked hard also are the costume, hair and makeup, art. We cannot forget them. Yeah, because I can't be Fetish girl without, you know, all of this. So thank you guys. That we had to say. Can you all come together? Yeah, of course.
निकाल दो. अरे can somebody take this off?